Hello everyone, welcome to Sharmaa classes. Today our topic is History chapter number 1, Rise of Nationalism in Europe. So this chapter on the basis of 10th class, it is very important. It's starting chapter, it carries a lot of weightage. So starting of the chapter's name denotes Rise of Nationalism in Europe. So what does the word nationalism means? As I explained you earlier, the word nationalism stands for sense of collective belonging that we get from the identity of the nation. एक देश के नाम से जो हमें अपनेपन की फीलिंग आए, ऐसे हम लोग कहते हैं हम सब भारतवासी हैं, तो भारतवासी कहने में जो एक सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग हमें फील होती है, उसी नेशनलिज्म की यहाँ पे बात की गई है। क्योंकि पहले के टाइम पे कोई नेशन स्टेट एग्जिस्ट नहीं करते थे, एग्जिस्ट करते थे तो क्या करते थे, डायनेस्टीज, एम्पायर्स जो एक रूलर के नाम पे थे, तो उस टाइम पे किसी की सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग नहीं थी, सिर्फ उनकी एक कलेक्टिव बिलोंगिंग थी कि वो एक पर्टिकुलर राजा के अंडर आते हैं, एक पर्टिकुलर एम्पायर से बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मराठा एम्पायर, चोला एम्पायर, चोला डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी, उस टाइम पे सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग सबकी ये थी कि वो उस पर्टिकुलर रूलर के अंडर या एम्पायर में आते हैं। तो नेशनलिज्म यहाँ पे जो नेशन स्टेट का आइडिया था वो स्टार्ट कहां से हुआ? इट स्टार्टेड फ्रॉम यूरोप। So nationalism means sense of collective belonging that we get from the identity of the nation. अब ये nationalism spread कराया किसने यूरोप पे? Who was that person who started nationalism in Europe? It was one person. He was the pioneer of this. His name was Giuseppe Mazzini. Giuseppe Mazzini was the first person who idolized or who introduced these terms in Europe. हालांकि पहले भी philosophers ने बात कर चुके थे इसकी, but he was the pioneer in bringing it to a large revolution, a large number, a large mass. He formed two societies, secret groups उन्होंने फॉर्म किए। पहला वाला था यंग इटली and another one was यंग यूरोप। Now as we start the chapter की स्टार्टिंग करते हैं तो पहले तो पढ़ चुके हैं कि नेशनलिज्म होता क्या है, what does the word nationalism means? So nationalism means sense of collective belonging। ठीक, अब जैसे हम चैप्टर खोलते हैं, पहला पेज खोलते हैं तो एक बड़ी सी पेंटिंग बनी हुई है एट द फर्स्ट पेज। What does this painting denotes? ये पिक्चर क्या डिनोट करती है? तो इस पेंटिंग के नीचे लिखा हुआ है, इट इज द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। इसका नाम है द पैक्ट बिटवीन नेशन। इट वॉज मेड बाय द फ्रेंच आर्टिस्ट फ्रेडरिक सोरो इन ईयर 1848। 1848 में फ्रेडरिक सोरो ने एक पेंटिंग बनाई एंड दिस पेंटिंग वाज एन यूटोपियन विजन ऑफ द आर्टिस्ट। यूटोपियन विजन को क्या बोलते हैं? यूटोपियन विजन मींस, हियर आई हैव रिटन यूटोपियन विजन, a society that is not likely to exist। एक सोसाइटी जो हो सकता है फ्यूचर में एग्जिस्ट ना करे, एक ऐसी सोच, ऐसे सोसाइटी की बनाने की सोच जो फ्यूचर में शायद एग्जिस्ट ना करे, उस टाइम पे एग्जिस्ट ना करे। तो जब इस पेंटिंग में देखते हैं द पैक्ट बिटवीन नेशन, यू विल सी अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग इन दिस पिक्चर। आप देखोगे द पीपल आर कमिंग फ्रॉम वन वे, दिस साइड, इस साइड से आ रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड से पीपल आर कमिंग एंड मूविंग टुवर्ड दिस साइड। उनके रास्ते में क्या पड़ता है? एक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी खड़ा हुआ है वहां पे, विच इज वन हैंड शोइंग द लाइट ऑफ एनलाइटनमेंट एंड सेकेंड हैंड इट कैरीज वन डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन। ऊपर से द एंजल्स एंड गॉड आर सीइंग देम एंड ब्लेसिंग देम, और बीच में जो पिक्चर के बीच में देखोगे नीचे जो पड़ा हुआ है, दैट इज द वेस्ट ऑफ मोनार्क। जो राजा महाराजा थे, जो मोनार्की वाला सिस्टम वो लोग अबॉलिश करके या फिर छोड़ के आ रहे थे, दैट वाज द सिस्टम जो वो पीछे छोड़ते चले जा रहे थे। तो जो हम वेस्ट देखेंगे, so we were talking about the waste that was shown in the between of the picture, जो पिक्चर के बीच में डला हुआ है, विल शो यू हियर। ये जो नीचे वेस्ट डला हुआ है, दिस वेस्ट, दिस डिनोट्स द वेस्ट ऑफ मोनार्क, हाउ द पीपल आर कमिंग फ्रॉम दिस साइड, लीविंग द वेस्ट ऑफ मोनार्क्स इन बिटवीन एंड मूविंग टुवर्ड्स द नेशन स्टेट। आइडिया ऑफ नेशन स्टेट। अब आइडिया ऑफ नेशन स्टेट क्या था? व्हाट वाज द आइडिया ऑफ नेशन स्टेट? बिग क्वेश्चन। अब भाई नेशन स्टेट किस चिड़िया का नाम था? जब किसी को पता नहीं था नेशन स्टेट होते क्या है, डायनेस्टिक एम्पायर्स थे, तो नेशन स्टेट था क्या? नेशन स्टेट एक ऐसी आइडियोलॉजी थी, एक विचारधारा थी लोगों की कि एक ऐसा नेशन बनाया जाए, देश बनाया जाए जो दो बेसिस पे चलते हो या दो बेसिस पे हो। पहला तो था कल्चरल बेसिस, व्हाट आर देयर कल्चर्स, जो उनके कल्चर्स हैं उस बेसिस पे से क्या किया जाए, सेपरेट किया जाए। और दूसरा था लिंग्विस्टिक बेसिस। कल्चरल बेसिस मींस उनका रहन सहन कैसा है, हाउ डू दे लिव, व्हाट कल्चर्स डू दे फॉलो, व्हाट कस्टम्स डू दे फॉलो। सेकंड वन वाज लिंग्विस्टिक। सो नेशन स्टेट वाज डिवाइडेड ऑन टू बेसिस। फर्स्ट वन वाज cultural and second one was linguistic।
कल्चरल बेसिस और लिंग्विस्टिक बेसिस। लिंग्विस्टिक बेसिस क्या हुए यहाँ पे, किस तरीके की भाषा वो बोलते हैं, व्हाट टाइप ऑफ लैंग्वेज डू दे स्पीक, द लैंग्वेज दे स्पोक वर द मेन बेसिस ऑन हाउ दे वर डिवाइडेड। फॉर एग्जांपल द पीपल इन फ्रेंच स्पोक फ्रेंच, ठीक, जो फ्रांस में पीपल थे, द पीपल इन फ्रांस स्पोक फ्रेंच, सो ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज दे स्पोक दे वर सेपरेटेड फ्रॉम द पीपल ऑफ रेस्ट। For example, some people living there spoke German, so they were separated, they were made alone. Some people stayed in the same country, it was up to the people. So nation state की जो आइडियोलॉजी थी वो दो बेसिस पे थी। पहला था कल्चरल बेसिस, व्हाट आर देयर कल्चरल बेसिस, एंड सेकंड वन वाज लिंग्विस्टिक बेसिस, किस तरीके की भाषा वो क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं। सो इट वाज ऑन देम। So now there are two meanings in the first page. Absolutist, it was a type of government which was centralized, militarized and repressive centralized, all the power was at center. They was used to practice a lot of power without worrying about anything. Militarized, so much military was to win over other countries to expand their territories. Repressive means repression on the people, how they used to treat the people. Repressive measures they used to take to control the people, to control the population. As we all know, there were many revolutionaries coming along this time. So to handle those, they have to take repressive measures. So what we have studied in this page, we are studying about the topic. It was a painting made by French artist. So Frederick Sorrow belonged to which country? He belonged to France, and we denote him as French artist. So the painting was the pact between nations. It is an important questions for the boards. Who formed the painting? Who created the painting, the pact between nations? On what basis it was formed? It was formed on the utopian vision of the French artist Frederick Sorrow. What was the utopian vision? A society of nation state where people will live in a nation state with full harmony, people with their own kinds. So this was the first page we have explained. Now we are going to revise what we read in French Revolution, because it is the continuation of French Revolution that we are going to read in this chapter. So what was French Revolution? Last year we have read in 9th class about French Revolution. I'll summarize something. Louis XVI was the king at that time. He made different policies. He tried to impose new taxes. A state general was called. A new tennis court was taken. A new constitutional monarch was formed. After that, a new club came out. The name of the club was Jacobins Club, headed by Maximilien Robespierre. Then we studied about King's Convention, how King was taken down by the Jacobin Club, and how Maximilien Robespierre transferred his power to himself. After Maximilien Robespierre came to power, a period started. The period was termed as the Reign of Terror. The Reign of Terror, people saw many changes. Some good changes were also taken, but mostly the changes that were very radical. Radical changes means any person tried to talk anything bad about Maximilien Robespierre was guillotined. He was executed. His head was cut. So these measures. Later on, Maximilien Robespierre was executed, was guillotined by his own members of society, Jacobin society. Later on, we see a directed rule over France, where a group of persons used to sit on the throne to not to centralize the power to a single hand. After that, we read about many things in this chapters that we are going to discuss later in our 9th class French Revolution video. But majorly at the end, we see the entry of Napoleon. So Napoleon entered France in 1798. 1798 Napoleon क्या करता है, फ्रांस में एंटर करता है, और 1804 he crowned himself as the new emperor of France. तो यहाँ पे क्या जाता है, फ्रांस आ जाता है. Now he takes various measures. What measures did he take? We are going to study right after this. So clear? These all things I have explained. Now this is a picture of board. You can take the notes, you can take the screenshot, or you can write, or you can form your own notes. If you have any doubt, you can go to the comment section and comment your doubt. I will be ready to help you in the comment section. Clear for everyone? Any doubts, you can write in the comment section. Later on, to the next topic, we move the Civil Code of 1804 that was introduced by.
So after the finishing, we read about Napoleon. So Napoleon entered Europe in 1798. 1798 he entered Europe. Entered Europe में कहाँ पे? He entered France. 1798 he entered France. France में जब उसने एंट्री की, so during these times in 1804 finally he crowned himself as the new emperor of France. So one thing, why did everything start from France? There is one saying by Duke Metternich also. When France sneezes, rest of the Europe catches cold. मतलब जो फ्रांस में हुआ उसके इफेक्ट सारे यूरोप में दिखे हैं. So after this, everything happened in France. We will be seeing in this chapter about the unification of Italy, unification of Germany, then the cases of Britain, Ireland, Scotland. So everything what happened in France had an effect on the whole of the Europe. 1804 he came, he became the emperor. People were very happy. अरे नेपोलियन आ गया, बहुत खुश थे लोग. So as soon as Napoleon came in 1804, he made few changes. अब जैसे वो आएगा तो अब राजा है तो अपने हिसाब से काम करेगा. तो जैसे वो आया तो उसने कुछ चेंजेस किए सोसाइटी में. What changes did he bring? He brought two type of changes. Administrative changes and political changes. और जो भी changes किए गए उसको बोला गया Civil Code of 1804, which was also termed as Napoleonic Code. जैसे फिर क्या बोला गया? Napoleonic Code भी बोला गया. अब what were the changes that administrative changes brought? अब changes क्या थे भाई जो नेपोलियन ने करा? कुछ तो होंगे. चलिए, तो फर्स्ट चेंज एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस वाज राइट टू प्रॉपर्टी. राइट टू प्रॉपर्टी, ये तो सर ये क्या है? राइट टू प्रॉपर्टी का मतलब ये था, पहले क्या हुआ करती थी, जो भी प्रॉपर्टी थी, फॉर एग्जाम्पल अ फादर्स प्रॉपर्टी इज इनहेरिटेड बाय हिज चाइल्ड. फर्स्टली इट वाज नॉट लाइक दिस. फर्स्टली द प्रॉपर्टी दैट वाज ओन्ड बाय फादर, इट यूज्ड टू बी आफ्टर हिज डेथ वाज ट्रांसफर्ड टू church. इसके पास जाती थी to the church, to the clergies. And later on, after the Napoleon changes, this system was finished, and now the property will directly go to his son. It will go to his sons. This was right to property. Our people were very happy. Then simplified administrative system. Everything that was going in the system, he made it very simple, very simplified. It was easier for people to carry out daily basis activities in the administrative system. Very good. Abolition of the feudal system. What does feudal system means? Feudal system क्या होता है? आपको जमीन मिलती है प्रोटेक्शन के बदले. आपको जमीन में जो आपको जमीन दी गई है उसका कुछ प्रोटेक्शन आपको हायर ऑफिशियल्स देंगे, बट उसके रिटर्न में आपको कुछ उन्हें देना पड़ेगा. यू हैव टू पे समथिंग. तो उन्होंने भैया फ्यूडल सिस्टम भी खत्म किया कि रहने दो, हम लोग खुद देख लेंगे. फ्यूडल सिस्टम उन्होंने खत्म किया कि भैया खत्म करो, फ्यूडल सिस्टम शुड बी अबॉलिश्ड. गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड. गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस क्या होता है? व्हाट डज गिल्ड रिस्ट्रिक्शन मींस? फॉर एग्जाम्पल, आई एम, एक बाजार में हम बैठते हैं और हम कुछ काम कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई एम मेकिंग समथिंग, आई एम अ गुड स्मिथ, आई एम मेकिंग समथिंग. तो जो भी मार्केट में जो भी गोल्ड सप्लाई हो रहा होगा, 2-4 लोगों का हमारा ग्रुप होगा, तो जो भी गोल्ड सप्लाई हो रहा है पर्टिकुलर मार्केट में, वो हम पांचों की निगरानी में से रहेगा और कोई बाहर का आके हमारे यहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकता. दिस वॉज गिल्ड रिस्ट्रिक्शन, गिल्ड सिस्टम. मतलब अपने रीजन में आप ही जो सारी चीजें, जो भी चीजें हो रही हैं आपके पर्टिकुलर टॉपिक रिलेटेड, मतलब जो भी आपका काम है उसमें आपके पूछे बिना कोई भी कुछ नहीं करेगा. तो वो सिस्टम हटा दी भैया. जिसको जो करना है, जैसे जहां से व्यापार करना है वो सभी लोग व्यापार करेंगे. एवरीवन इज फ्री, लिबरल. ओके. स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स एंड मेजर्स. पहले क्या हुआ करता था? वी आर गोइंग टू रीड इन दिस चैप्टर. मेजर्स अलग अलग हुआ करते थे. फॉर एग्जाम्पल, नाप हुई तो अलग अलग हुआ, यहाँ पे अलग हुआ, दूसरे रीजन में अलग हुई. वेट्स के क्या हुए? यहाँ पे वेट कुछ अलग हुआ, वहां पे कुछ ज्यादा हो गया, कुछ कम हो गया. तो स्टैंडर्डाइज कर दिया भाई, सारे जगह पे वेट सेम लगा. पीपल वेर मोर हैप्पी. नाउ पीपल वांटेड कि नेपोलियन जैसे फ्रांस में है वो हमारे देशों में भी है. स्टार्ट टू कम इन अवर नेशन एज वेल. पीपल वेर वेरी हैप्पी. कॉमन करेंसी, एक करेंसी कर दी. कॉमन करेंसी मतलब वही यूज करेंगे, सॉरी जो करेंसीज है वो सभी लोग वही यूज करेंगे. कॉमन करेंसीज, ज्यादा करेंसीज नहीं, कम करेंसीज करती, ज्यादा जो भी हुआ करती थी. पहले क्या हुआ करता था? डायनेस्टिक एम्पायर्स थे. डायनेस्टिक एम्पायर्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ करेंसीज. उस करेंसीज को ही रिड्यूस उस करेंसीज एंड कॉमन करेंसी करती कि भैया फ्रांस में यही सारी चीजें होगी. एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस देख के बहुत खुश हुए. वेरी गुड. पीपल वेर वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी. उन्हें क्या समझने लगे? हार्बिंगर समझने लगे कि भैया ये हमें स्वतंत्रता देने आए हैं, हमारे पास आएंगे और हमें फ्रीडम देंगे. बहुत है. बट ये जितनी खुशी थी वो बहुत जल्दी गम में बदल गई जब पॉलिटिकल चेंजेस उन्हें पता चले. So the happiness turned into hostility. The happiness turned into hostility. What happened? What were the political changes? Increased taxation. Of course, there will be increased taxation. अब लोग चाह रहे थे नेपोलियन इसके पास आए, तो how will he earn money to maintain his army, to maintain his vast army, to maintain the cavalries, everything?
सो इंक्रीज टैक्सेशन, टैक्सेशन बढ़ा दिए गए, टैक्सेशन इन पे लगा दिए गए सब पे. सेंसरशिप, एज वी हैव अंडरस्टूड, सेंसरशिप पहले कहां पे थी? सेंसरशिप ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन वी स्टडीड अबाउट सेंसरशिप. तो सेंसरशिप वाज अगेन introduced. No one can publish anything or talk about anything bad about the king. That was Napoleon Bonaparte. Then forced conscriptions into French armies. What does conscription means? Recruitment. जबरदस्ती भर्ती कराया गया लोगों को आर्मी में. The young people were forcefully recruited in the army. Last one was slavery was reintroduced. फिर से reintroduce कर दी गई slavery introduce करने का रीजन क्या था? जब मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर पे थे, he abolished slavery. Or slaves were purchased from the islands of Africa and sent to the Caribbean islands, and later on the final product reached to France. It was a slave triangle. Last year we have read about slave triangle. This was France, this was Africa, and this was America. This was what? Slave triangle. So this was where slavery was reintroduced. Now the people were very worried about the things that are going to happen in future. वो जितना ज्यादा यहाँ पे खुश हुए उतना ही दुखी हो गए. The happiness turned into hostility. As soon as this hostility turned, the people, mostly the middle classes, they turned to the neighboring countries. There are 4 neighboring countries, important neighboring countries. I have created a mnemonic. I call them Bap Re. So 4 countries were: B for Britain, A for Austria, P for Prussia, and R for Russia. So ये 4 countries के पास है: Britain, Austria, Prussia and Russia. So 4 countries they seeked for help. उन्होंने मदद मांगी. भाई लोगों ने मदद की because they were also worried कि later on Napoleon कहीं उनके देश में ना आ जाए. So these all countries went against a war against Napoleon, and that war which they went against, we all know about that war. आप लोग पढ़ चुके होंगे शायद स्कूल में भी. तो 1815 a war was formed. उसे बोला गया बैटल ऑफ Waterloo. Battle of Waterloo, where Napoleon was defeated by this ally of 4 countries. These 4 countries were Britain, Austria, Prussia and Russia. So after this defeating of Napoleon क्या हुआ होगा? तो जो भी नेपोलियन की टेरिटरीज थी वो सारी कंट्रीज बैठ गई साथ में. क्या करने के लिए? बंटवारा करने के लिए. ठीक, जैसे घर में कोई बड़ा चला गया तो हाल उनके तुरंत बेटे बैठ गए बंटवारा करने के लिए. तो वैसे यहाँ पे हुआ. तो 4 कंट्रीज थी वो आपस में बैठ गई एंड टू डिसाइड व्हाट शुड हैपन. सो दे ऑल 4 कंट्रीज, ये जो 4 कंट्रीज थी, दे मेट एट वियना. कहां पे मिली? वियना में मिली अंडर द लीडरशिप ऑफ ड्यूक मेटरनिच. ही वॉज Austrian Chancellor. He was Austrian Chancellor. What does Chancellor means? It is the second highest position after the President. President के बाद अगर किसी की पोजीशन आती है तो होते हैं Chancellor. तो ड्यूक मेटरनिच बैठे वियना में ने मीटिंग हेड की और इसको बोला गया वियना कांग्रेस, a session where all these 4 countries came and discussed about what to be done to the territories that were annexed under Napoleon. What changes did Napoleon bring? So this is what we have studied right now. I'm leaving the screen so you can take the screenshot of the notes and prepare the notes. If you have doubt regarding anything, you can go to the comment section and ask your doubts. You feel free to ask how many doubts you want. No problem, every doubt will be cleared. So I am going to revise this whole topic again. Napoleon came to France in 1798. In 1804, he was crowned as the Emperor of France. Later on, he brought 2 changes: administrative changes and political changes. What were administrative changes? These both changes were commonly known as Civil Code of 1804. इन्हें क्या बोला गया? Civil Code of 1804, which was also known by the name Napoleonic Code. Now there may be question arising in the board exam. Napoleonic Code of Conduct were however good, but what changes made the people change their mind from loving Napoleon to hating Napoleon? मतलब ऐसे क्या changes हुए इसमें लोगों को नेपोलियन को बहुत पसंद था पहले, फिर नेपोलियन से हेट करने लगे. So we will describe about the political changes were the main reason for the people starting to hate Napoleon. Okay,
Administrative changes the right to property. Firstly, the property used to go to the church. Now Napoleon said, "ना ऐसा नहीं होगा. Property will directly go to the son." Then simplified administrative system. All the procedures were made very simple for everyone. Then abolition of feudal system. जो feudal system था उसे खत्म कर दिया गया. No protection was needed now. पहले protection दिया करते थे, बोला नहीं चाहिए कोई protection. Guild restrictions were removed. मार्केट में किसी की मनमानी नहीं चलेगी. Everyone can deal in the market very freely. Standardized weights and measures. तो जो भी different colonies, different areas में क्या थे, standardized different measures थे, different weights थे, उन्हें क्या कर दिया भैया separate, मतलब सेम कर दिया, सबको सेम है, जो भी चलेगा सेम. Common currency. Now people were very happy about these changes, but their happiness turned into, as I told, hostility. निराश हो गए बेचारे. Increased taxation. Now taxation was increased. हर जगह पे taxation की बात हुई है. French Revolution. Now coming to the political changes, we were revising. Increased taxation. Taxation बढ़ा दी. Reason क्या था taxation बढ़ाने का? भाई इतनी सही आर्मी मेंटेन भी करनी है, बट इतना ज्यादा टैक्स बढ़ा दोगे तो लोग करेंगे क्या? जहां जहां टैक्सेस बढ़े वहां revolutions हुए. So increased taxation led to revolution. That was same thing happened in French Revolution. We read about increased taxation were increased and taxation were put on two basic things. पहले तो शुरुआत में दो बेसिक थिंग्स थे, सॉल्ट एंड टोबैको. लेटर जब टैक्सेस बढ़ाने की बात हुई तो क्या हुआ आप सभी जानते हैं. सेंसरशिप वॉज रेस्ट्रिक्शन लगाया गया कि नो वन कैन टॉक एनीथिंग बैडली अबाउट एनी क्या नेपोलियन के बारे में कोई बुरा बात नहीं कर सकता. इफ एनीवन इज ट्राइंग टू टॉक बैड अबाउट नेपोलियन और ट्राइंग टू रप्चर द इमेज ऑफ नेपोलियन इन द पब्लिक, he is may be sentenced to jail or may be sentenced to death penalty. Forced conscription and French army, जबरदस्ती लोगों को भर्ती कराया गया आर्मी में. Slavery was finally reintroduced, फिर से reintroduce कर दी गई. Slave triangle के बारे में पढ़ा था अपन लोगों ने. When slavery was reintroduced, then all four countries, which we call them Bapre, Britain, Austria, Prussia and Russia, they fought a war against Napoleon in 1815. In 1815 में वॉर होने के बाद हुआ क्या? जब बैटल ऑफ वाटरलू नेपोलियन डिफीट कर गया, हार गया, देन दे मेट एट वियना अंडर द लीडरशिप ऑफ ड्यूक मेटरनिच, ऑस्ट्रियन चांसलर, जिन्होंने क्या हुआ डिस्कस हुआ. जो भी डिस्कस हुआ वो हम कल डिस्कस करेंगे कल के वीडियो में. इसको बोर्ड के आप सारे नोट्स लिख लें. जो भी आपके डाउट्स हो, सारे डाउट्स यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. फील फ्री टू आस्क. जितने भी डाउट्स आपके आ रहे हैं कोई बात नहीं, यू कैन आस्क एज मेनी डाउट्स एज यू वांट. जो चीज समझ में नहीं है वो पूछिए. एंड यू कैन वॉच दिस वीडियो अगेन एंड अगेन फॉर द रिवीजन पर्पस. इज इट इजी? आई एम गिविंग शॉर्ट वीडियोस फॉर द पर्टिकुलर टॉपिक कि आप टॉपिक को क्या कर सके, रिवाइज कर सके. सी यू टुमारो. पीस आउट.